The enthalpy of an element in standard state is 0. Standard state means in a stable state. Acha? When an element is in its stable state. For example, if you have graphite and diamond, the stable state is the graphite, that diamond. Okay? Similarly, if you take hydrogen, then H2 is the stable state, not H. Question number 70, a beaker had potassium chloride, and when we add potassium chloride, some of the potassium chloride is precipitated. It means that potassium chloride is a stronger electrolyte. It is more soluble. तो अगर आपके साथ दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, one is weak and the other one is strong, is it okay? So the strong electrolyte will go to solution and the weak electrolyte will get precipitated. तो precipitate कौन बना रहा है? KClO3. So KCl is the strong electrolyte. Question number 71. In Haber process for the manufacture of ammonia, nitrogen is taken from the air because air is a cheaper reaction. Cheaper source of nitrogen is air. Which of the following statements is true about water? It is a weak electrolyte. It is a weak electrolyte because it contains very few number of hydrogen ion and very few number of hydroxide ion. Addition of acid changes the ionic product of water. Ionic product of water is never changed. Ionic product remains the same. Kw of water is 14. Kw is 10 raised to the power minus 14. समझ आ गई बात? Kw से बराबर ही 10 raised to the power minus 14, not 14. Question number 73. If any particular time the ratio of the product and the reactant is less, he is talking about the QC. If QC is less than KC, it means the reaction is not completed and it is moving in the forward direction. Question number 74. pH is equal to pKa plus log of salt divided by acid. This is the Henderson-Hazelbush equation. Henderson-Hazelbush equation. So if the concentration of salt and acid are equal, if they are equal, so log of 1 by 1 is 1, so ये 0 आ जाएगा. And pH will be equal to pKa. So if pKa is 2, then pH will also be equal to 2. Option number B is correct. Question number 75. 1 calorie is equal to 4.184 joule. Option number C is correct. The product of the ionic concentration in a saturated solution of electrolyte at a given temperature is constant and it is known as solubility product. Option number B. Solubility product क्या है? It is actually the ionic product of a saturated solution at a given temperature. Question number 77. Which one of the following is true regarding the effect of catalyst on equilibrium? A catalyst increases the rate of reaction in both forward and, but it has no effect on the equilibrium. इसका मतलब है कि Kc की वैल्यू पर इसका कोई असर नहीं होता. Question number 78. In a reversible chemical reaction having two reactant equilibrium, if the concentration of the reactant are double, then the equilibrium constant will not change. It is independent of the initial concentration. Question number 79. The pH of our blood is from 7.35 to 7.4. So 79 में option number D is correct. Question number 80. An exothermic reaction is allowed to take place at very low temperature of very temperature of surrounding air. Surrounding temperature क्या होगा air का? That will
increase because heat is evolved. जिस तरह हम वुड जलाते हैं ना तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होता है. द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर यूजुअली एक्सोथर्मिक भी होते हैं और फास्ट भी होते हैं. जरूरी नहीं है कि फास्ट हो, लेकिन आमतौर पर यूजुअली ये फास्ट होते हैं और एक्सोथर्मिक होते हैं. Question number 82. The value of Kc is affected only by temperature 83. The study of equilibrium constant provide us which of the following information? All of these information. Very good. Question number 84. Which catalyst is used in Haber process? Iron with magnesium oxide. Magnesium oxide is called promoter. It is called promoter. It increases the efficiency of the iron catalyst. It increases the efficiency of the iron catalyst. And it has very high melting point, so it does not make any problem. Okay? Question number 85. Formation of ammonia is reversible exothermic process. What will happen on cooling? More product is formed. Very good. Question number 86. 2x plus y goes into z plus 80 calories. The process is exothermic. The process is, so low temperature is required for high yield, but the number of moles of the reactant are greater than the product. So high pressure is required and low temperature is required. Option number A. This is exothermic. द प्लस 80 ये डेल्टा एच अगर हम लिखते हैं ना डेल्टा एच फॉर्म में कि डेल्टा एच इज प्लस 80 तो फिर ये एंडोथर्मिक होगा. हाँ, लेकिन हमने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट के साथ प्लस 80 लिखा है, डेल्टा एच हमने नहीं लिखा. सो दिस इज एक्सोथर्मिक. हाँ, तो फिर ये एक्सोथर्मिक होगा. जी बच्चे जी, सच है. 86 में बेटा ये है कि हमारे पास ये रिएक्शन है, तो वी हैव 3 moles ऑफ रिएक्टेंट्स एंड वी हैव 1 mole ऑफ द प्रोडक्ट. So the product has smaller volume. So if you increase the pressure, forward reaction will occur. So high pressure is required. लेकिन ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है. इसका मतलब ये कि जेड के बनने के साथ साथ हीट भी निकल रहा है, हीट भी निकल रहा है. डेल्टा एच हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट प्रोडक्ट और प्लस 80. सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. So exothermic reaction are favored at low temperature, not at high temperature. उसको शुभ होगा. देखिए, I can for endothermic reaction there are 2 ways for exothermic reaction. Either you write the exothermic reaction in this way, or you will write 2s plus yz and delta H is minus 80. These 2 things have the same meaning. They have got the same meaning. Question number 86. ये हो गया ना. इसमें ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 87. ऑन हीटिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिकम्पोजेज. आप देखें 2NO2 चेंजेस 2NO plus O2. इसके 4 मोल हमने लिए हैं, ये 0 मोल होगा. समझ आ गई बात. इन इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 0.8. अब देखो ना, इनके मोल्स के दरमियान क्या रेशो है? 1:2. तो अगर ये इतना बना है तो ये कितना बना होगा? 1.6. इज इट ओके? अच्छा, और इसके 2 मोल से इसके कितने मोल बनते? 2 मोल. तो इन दोनों के मोल बराबर है. इसका मतलब ये है कि अगर ये 1.6 मोल बना है तो ये 1.6 मोल डिकम्पोज हुआ है. So final concentration of NO2 will be 4 and minus 1.6. So Kc will be equal to concentration of NO 1.6 raised to the power 2
इंटू 0.8 और 4 से 1.6 माइनस करें तो ये 2.4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2.4 रेज़ टू द पावर 2. So this is option number D. Question number 88. The arbitrary equilibrium of the partial, देखिए Kc is equal to molar concentration of ammonia raised to the power 2 into H2 raised to the power 3. इसकी concentration 1 है और इसकी concentration भी 1 है और इसकी concentration कितनी है, 3 है, तो ये हो जाएगा 1/27. Option number B is correct. Question number 89. At 4400 atmosphere, the equilibrium constant Kp is 50. What will be the value of Kp at 2 atmospheric pressure? हाँ, तो प्रेशर ज्यादा होने से इक्विलिब्रियम पर कुछ फर्क नहीं पड़ता. इक्विलिब्रियम और मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी बराबर हैं. अगर बराबर ना भी हो फिर भी Kc और Kp चेंज नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर 90. A reaction reaches a state of equilibrium only when the product react together at the same rate at which they are formed. यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है ना वो बराबर हो जाते हैं. 91. For which one of the following Kp is less than Kc? Kp तब छोटा होगा जब प्रोडक्ट के मोल कम हो, जब प्रोडक्ट के मोल कम हो रिएक्टेंट से. तो ऑप्शन नंबर B is correct. Question number 92. This is an endothermic reaction. Look, I have written it in the form of delta H value. Delta H is positive. So the reaction is endothermic. The reaction will be shifted in forward direction by lowering the temperature. No, because it is endothermic. ये गलत है. हाँ. Increase in the pressure has no effect because number of moles of reactant and product are same. Increase in the concentration of product, CO is a product, so product will not favor the forward reaction. Increasing the concentration of hydrogen, hydrogen is reactant, so it will push the reaction towards the forward direction. 93. For reaction, if the value of Kc increases with increase in temperature, then it means the reaction is endothermic and delta H will be positive. 94. In an exothermic reaction, delta H is less than 0, यानी माइनस होगी. समझ आ गई बात. 95. N2O4, NO2 is red but N2O4 is colorless. When the temperature is increased to 100, the equilibrium mixture become red. इसका मतलब है कि हीटिंग से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. तो इसका मतलब है कि the forward reaction is endothermic reaction. तो 95 में ऑप्शन नंबर A is correct. माशाल्लाह केमिस्ट्री में तो आप मुझसे भी ज्यादा लायक हैं. हाँ, अच्छा. क्वेश्चन नंबर 96. N2O4 and 2NO2 अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है और इसकी 0 है तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 बिकम 1 माइनस X. लेकिन इसके जितने मोल यूज हुए हैं तो उतने उससे डबल मोल इधर बनेंगे, तो ये 2x हो जाएगा. माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड. 96 में B. आप शागिर्द मेरे हैं ना, इस वजह से काबिल. लेट द डेंसिटी ऑफ नवस पंजों को let the density of 1 kilogram of gold is X, then the density of 0.5 mole is. तो ये याद रखें कि सॉलिड की कंसंट्रेशन या सॉलिड की डेंसिटी वो कांस्टेंट होती है, चाहे आप ज्यादा मिकदार लें चाहे आप कम मिकदार लें, क्योंकि डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम. तो आप वॉल्यूम कम करेंगे मास भी कम होगा, मास कम होगा वॉल्यूम भी कम होगा. सो डेंसिटी रिमेन्स द सेम. और डेंसिटी जो है ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये तसव्वुर इंटेंसिव, so it will remain the same. Question number 98. This is a reaction when the pressure is reduced. Look, if you increase the pressure the system will move in the reverse direction, but if the pressure is reduced the system will shift in the
फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 99. We have this reaction. Or the equilibrium concentration of B is 10 mole per liter. What will be the new equilibrium concentration of B if 5 mole of B is added? So look, आपने जब 5 डाला है तो ये कितना हो जाएगा? 15। लेकिन B के डालने से फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा और B की कुछ मिकदार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो 15 से तो कम हो जाएगा, लेकिन 10 से अब भी ज्यादा होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इवन इफ यू, जिसने सवाल पूछा है, आप मेरी बात सुने। इवन इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इन द रिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? Because in the reversible reaction, some amount of the reactants is always present in the container. तो एक ही कुछ मिकदार भी मौजूद होगी। आपने सिर्फ बी डाला है, लेकिन ए भी कुछ अनरिएक्टेड फॉर्म में मौजूद होता है। सो द रिएक्शन विल बी पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना, अक्सर क्वेश्चन इनमें से पेपर में आ चुके हैं। पिछले पेपर में ये आ चुके हैं। दा क्वेश्चन देर मा कतले पेपर के क्वेश्चन नंबर 99। और ये बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100। ये जो आपका हम यहाँ पर टेस्ट लेते हैं, तो जो स्टूडेंट टेस्ट के लिए आते हैं यही क्वेश्चन होते हैं ना। हमारे पास बाज़ का पर्चा बनाने के लिए क्वेश्चन बाकी नहीं रहते हैं। हम सोचते हैं ना कि ये क्वेश्चन आया तो नहीं है पिछले पेपर में, तो बार बार सोचते हैं, बड़े एहतियात से क्वेश्चन देते हैं कि इम्पॉर्टेंट भी हो और पिछले पेपर में वो आए भी ना हो, यानी हमारे टेस्टों में ना आए हों, पिछले पेपरों में भी आए होते हैं। समझ आ गई बात? तो ये यकीन रखें कि जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम आपको देते हैं, अगर आप सही तरीके से इनको स्टडी करें और सारे ऑप्शन पर गौर करें, तो आप 100% नंबर हासिल करेंगे। समझ आ गई बात? क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, कोई आसमान से क्वेश्चन नहीं उतरता है। क्वेश्चन नंबर 100 इज वेरी वेरी कंसेप्चुअल। अच्छा, इसमें बेटा ये है कि हमने रिएक्शन को सिर्फ क्या किया है, उल्टा, यानी रिएक्टेंट को हमने प्रोडक्ट बनाया है और प्रोडक्ट को हमने रिएक्टेंट। तो के जो है ना, अगर ये K1 है तो दूसरे रिएक्शन का जो K2 है ना, K2 और K1 के दरमियान रिलेशन होगा K1 इज इक्वल टू 1 ओवर K2 या K2 इज इक्वल टू 1 ओवर K1। लगा फॉर एग्जाम्पल K1 अगर 4 है तो K2 आपका फिर 1 ओवर 4 हो जाए, उल्टा हो जाए। हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 101। दिस रिएक्शन इज although a reversible reaction, although it is reversible, but if this reaction is performed in an open container, then what happens? The carbon dioxide gas will escape and equilibrium will not be established. How? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के लिए कंडीशन ये होता है कि द कंटेनर शुड बी क्लोज। सो इफ इट इज ओपन कंटेनर, द प्रोडक्ट विल बी फॉर्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड एंड इट विल बी removed from the container because it escapes into the air. So the reaction will go to 100% completion. आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन 100% कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन इस केस में क्यों जाएगा? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स, और जब ये एस्केप होगा तो रिवर्स रिएक्शन होगा नहीं। जब रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन विल गो टू कंप्लीशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 101 में ऑप्शन नंबर डी। 102, यू नो दैट sublimation, vaporization, melting and photosynthesis are all endothermic processes. They are endothermic. No, endothermic है। Photosynthesis is a non-spontaneous process. Melting is non-spontaneous. Only vaporization is spontaneous. समझ आ गई बात?
और इवापोरेशन इज a spontaneous, वेपोराइजेशन भी नहीं, वेपोराइजेशन इज द इवापोरेशन आफ्टर हीटिंग। हाँ, तो ये सारे बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं। 10 जी बच्चे। अच्छा, फिजिकल है लेकिन फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो 102 में ऑप्शन नंबर बी। 103 विच स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उसको कहते हैं कि जो एक दफा शुरू हो जाए ना तो फिर उसके लिए बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वो खुद ब खुद कंप्लीट होता है। डिस्कशन के बाद आप मेरे साथ मिलें ताकि आपको समझाऊं, इतना आसान भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगरचे ये आपके कोर्स में मेथड ऑफ ऑर्डर फाइंडिंग नहीं है, लेकिन पंजाब बुक में है। तो ये मेथड यूज होते हैं, डिफरेंशियल मेथड है, हाफ लाइफ मेथड है, मेथड ऑफ लार्ज एक्सिस दा टूल से दादा ऑर्डर मालूम हो पा रही। और ये डी जो है डायलेटोमेट्रिक मेथड, इट इज यूज फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये स्पीड के लिए, रेट के लिए। डायलेटोमीटर से हम वॉल्यूम मालूम करते हैं जब हमारे पास गैसियस प्रोडक्ट बन रहा हो। तो 104 में इन हेबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम द एयर। द रिपीट से ये मैंने उसको बताया भी था कि आप इसको रिपीट ना करें, लेकिन उसने दोबारा इसको रिपीट किया। हम पर्चा एक तरह बनाते हैं, फिर पर्चा हमें दूसरे तरह मिल जाते हैं। 105 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? Product have lower energy than the reactant. Half-life period is independent of the initial concentration for the first order. आपने फिजिक्स में भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है, रेडियो एक्टिविटी। तो हाफ लाइफ जो है ना वो चेंज नहीं होता है कंसंट्रेशन चेंज होने से। वजह यह है कि जब कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाता है। दैट्स व्हाई द हाफ लाइफ इज नॉट अफेक्टेड। Question number 107. When a reactant and product moles at equilibrium are not equal, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स बराबर ना हो तो फिर केसी का तो यूनिट होगा ना, और ये यूनिट जो है इट विल बी इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन और प्रेशर। अगर केसी है तो हम कंसंट्रेशन का यूनिट लिखेंगे, अगर के पी है तो फिर हम प्रेशर का यूनिट लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। लोअरिंग, हाँ, केसी हैज द यूनिट। तो आपके ख्याल में कौन सा जवाब? अच्छा, हाँ ठीक है। अगर सिर्फ केसी आप लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर होगा और केसी नहीं लिखा होगा, का केसी नहीं लिखे और सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा हो तो फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लेकिन अगर के सी लिखा है तो फिर कंसंट्रेशन ठीक है, फिर कंसंट्रेशन ठीक है। हाँ, आप मेरी बात समझ गए? सो इन दिस केस ए आंसर इज मोर सुटेबल। अगर के सी ना हो, सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते होते तो फिर दोनों जवाब ठीक है। लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर फेवर्स द यील्ड ऑफ एमोनिया इन हेबर प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, however the temperature is not lowered below 400 degrees centigrade. Why? Because then the rate of formation of ammonia will decrease. Question number 109. The study of equilibrium constant provide us with the following information. This is all of them. Again this is revised. Question number 110. Spontaneous reaction are those, इधर आपको definition मिल गया spontaneous का, which continue to occur once started. Question number 111. Most thermodynamic parameters are state function. Only work and heat are not state function. Enthalpy, entropy, internal energy, that all state function. अच्छा, इसमें एक मकसदी बात आप सुने। बाजू का स्टूडेंट इस तरह कंफ्यूज हो जाता है कि आप जब उससे पूछते हैं ना कि डेल्टा एच स्टेट फंक्शन है कि एच स्टेट फंक्शन है, तो अक्सर स्टूडेंट
डेल्टा एच को स्टेट फंक्शन कहते हैं, लेकिन ये स्टेट फंक्शन। इसी तरह ई स्टेट फंक्शन है। अच्छा, डेल्टा ई इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखें। तो देखो, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सारे जो है ना, दे आर स्टेट फंक्शन। आवर वर्क, आवर हीट जो है, दे आर पाथ फंक्शन। तो 110 में मोस्ट ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट फंक्शन, 111 में ऑप्शन नंबर डी। 112, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। तो देखो, कंडेंसेशन के लिए हीट रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि इट इज एक्सोथर्मिक। वेपोराइजेशन के लिए थोड़ा हीट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। सो फॉर दिस पर्पस वी नीड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट। 113, if delta E and Q are equal, it means the system is at constant वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा ई और क्यू आपस में बराबर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। डेल्टा यू मीन डेल्टा ई इज यूजुअली सिग्निफिकेंट फॉर दो सिस्टम विच इन्वॉल्व गैसेस। यानी चिपकम रिएक्शन की गैसियस प्रोडक्ट जुड़ेगी, समझ आ गई बात। तो उसमें चूंकि एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो वॉल्यूम चेंज ज्यादा आएगा एंड वर्क डन विल बी सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन नंबर 115, दिस इज अ रिएक्शन, और यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन जब होता है, व्हेन अ रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, वो कोएफिशिएंट के बराबर होता है। अदरवाइज कोएफिशिएंट के बराबर जरूरी नहीं है कि कोएफिशिएंट के बराबर हो, लेकिन इफ द रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप, देन ऑर्डर एंड कोएफिशिएंट आर सेम। तो इसका मतलब ये है कि कोएफिशिएंट ए का क्या है, 2 और बी का 1 है। तो रेट लॉ विल बी ए स्क्वायर एंड बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 116, the rate of chemical reaction tells us about it, how fast or how slow a reaction is. 117, and the rate equation when the concentration of reactant is unity. तो इसको फिर हम specific rate constant कहते हैं। Option number A is correct. 118, the rate of reaction between two specific time interval is called average rate. 119, for the following reaction, if 0.1 mole of gaseous carbon monoxide is added, remember the carbon monoxide does not appear in the rate law. It means the rate is not affected by carbon monoxide. Is that okay? This reaction is zero order with respect to carbon monoxide. Is that okay? So if you change the concentration of CO, rate of reaction will not change. And in the rate equation, you look, rate is equal to K NO2 raised to the power 2. So K depends on the concentration of NO2 but not CO. तो रेट कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा और रेट भी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ये बात गलत है। इट मे बी इन फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 121, वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज अफेक्टेड ओनली बाय टेम्परेचर। ये याद रखो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। वो किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। और टेम्परेचर में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हम करें तो रेट सिर्फ डबल होगा, और अगर 20 डिग्री राइज करें टेम्परेचर को तो रेट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 4 टाइम्स ज्यादा। अगर 30 डिग्री राइज करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 टाइम्स। दगा सी तरीका बाने बाका। क्वेश्चन नंबर लास्ट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखें, रेट इज इक्वल टू के इनटू ए रेज टू द पावर जीरो. सो के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर जीरो. So mole per decimeter cube per second divided by 1 is equal to mole per decimeter cube per second. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. ये जो रेट कांस्टेंट के यूनिट हैं ये आप जरूर स्टडी करें, रेट कांस्टेंट के यूनिट को जरूर स्टडी करें.